a special game. Whatever the result, still a very special game of cricket. We're going to start with the Pakistan batsman, who contributed right at the start of the day to what would have been a tricky situation. Having been asked to bat first, there's always that thing you have to try and work out what is going to be a good score on a pitch. And at the end, that 176 for 4 looked a reasonably good score. I don't know whether we reckon it was just above par, but it looked a reasonably good score. It was quite a good score. We had some lapses in the field and few bad overs, of course. In T20 cricket there are those big overs, but it was a quite good, decent score where any team could have fought. And one of the players who got us there was Mohammad Rizwan. अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 2 दिन पहले ये ICU में थे लंग इन्फेक्शन को लेके इस मैच से पहले, और हमने पहले भी इनकी वर्क एथिक पे बात की, इनकी कमिटमेंट पे बात की है, और वो आज भी नज़र आई कि बहुत जान मारी एंड तक, कहीं से भी नज़र नहीं आया कि कोई एफर्ट में कोई कमी नज़र आई। नहीं बिल्कुल, जैसे आपने कहा 2 दिन हॉस्पिटल में थे, 102 101 का इनके टेम्परेचर था और कल प्रैक्टिस पे भी नहीं आया। तो जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की और रनिंग बिटवीन द विकेट, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा, और इनके सलूट है इनको, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी और ये एटीट्यूड के ऊपर, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और आज इन्होंने कैलेंडर ईयर में शायद 1000 रन कंप्लीट किए हैं और बड़ा क्रेडिट है, टेस्ट क्रिकेट में हो जाते हैं लेकिन T20 में जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं और पूरे थ्रू आउट द ईयर देखें इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन इतनी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप ना जीते, फाइनल में ना पहुँचे, कि अफसोस सबको है, लेकिन इनको कितना अफसोस हुआ होगा कि इतनी एफर्ट करने के बाद भी। लेकिन इनकी बैटिंग देख के, बाबर की, फ़खर की और तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के एक होप हो चलिए पूरे पाकिस्तान को कि फ्यूचर में आके ये प्लेयर्स बड़ा नाम करेंगे और अगले इवेंट भी आएंगे, अलग टेस्ट मैचेस भी आने वाले हैं पाकिस्तान के। तो इसको बस एक तरह से आपको झाड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा यानी वर्ल्ड कप को। लेकिन जितना भी खेला पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और इसके लिए सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मोहम्मद रिजवान, हिज वर्क एथिक, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट अ लॉट, एंड विद हिज sickness he was still there in that humidity, and I mean what can we talk about his commitment more? He's been great at the top. 1000 runs in T20 in a calendar year. Yeah, coming from hospital, out of hospital to play a game like this is a remarkable achievement in anyone's book. He looked, I mean, the only thing to say, he looked, dare I say, a little feverish right at the start, didn't he? I mean, that's probably the wrong word technically, but he was a little nervous, he was a little edgy. So it took him, 5-10 minutes to settle, but then straight into it. You just look at him, he's a warrior. You know, just the way in which he got, just the body language, and you wouldn't realize that there was any sort of illness associated to him the way he played today. But he's just an individual. When he, especially some of those shots that he played towards the onside, his bat was like a swordsman. You know, he was like Zorro or one of these individuals, the characters, you know. Yeah. Just how quickly the arms move, you know, and that's very impressive. And what I can say as well, too, the guy who you would have replaced would have been from Sarfaraz, from the Quetta Gladiators there. He was a busybody as well. But to replace him, he had to be extra special. And this guy brought it. You know, he's a huge difference to what goes on with the Pakistan innings. Yeah, and we'll move on from him. Fakhar Zaman, I think you've told me a dozen times in the last 3 weeks he's a big match player. We finally found the match that he likes, because this was by far his best performance. I mean, look, today few shots was like, my God, goodness me, outstanding. 2 sixes, pretty. One was flat, and in the end, 2 super sixes. They'll be coming. He's the kind of player who has his own zones. One day he walks in, you will find him a different player, and then next 1 or 2 games he would be doing something very ordinary. But he's a kind of match winner. Can play unbelievable inning.
Well, they needed this today for sure, and at the time it looked like a bit of a saviour. It looked as though it got them far enough, close enough to the right sort of target. 176. For us, for me, it was a very, very good score. But I think from over 1 to 20, all positives going on. They never felt short of runs or under pressure. Everything was smooth. 176, happy. Got 2 early wickets, and then all of a sudden, England couldn't defend 162, and Pakistan even 176. It has been the trend in the tournament, hasn't it? And that thing is right, that it's hard to defend whatever happens. Because there is only one team defended. All games in Dubai and Abu Dhabi are the similar patterns. इसमें देखिए हमें भी मैचअप की ज़रूरत है इसमें। हमने बात की कि इमाद वसीम को न्यू बॉल करनी चाहिए थी। ये वीडियो एनालिस्ट का, डाटा एनालिस्ट का काम था कि जब फिंच आउट हो गया है तो वार्नर सबसे अच्छा जो खेलता है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलता है। उसकी स्ट्राइक रेट कैरियर की 157 की है, तो इमाद को फौरन से हटा देना चाहिए उस वक्त हफीज को ले, क्योंकि और उसका क्या है, 4th स्टंप पे स्ट्रगल करता है वो। आप उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। गेम एक्चुअली चौथे ओवर में 17 रन जो इमाद ने बनाया वहां से टर्न किया उसने। हम आखिर में नहीं जाएंगे कि शाहीन आफरीदी को कितने पड़ गए। ये 17 रन काउंट होंगे, फिर हफीज के 13 रन काउंट होंगे, 2 ओवर में 30 रन। ये डाटा एनालिस्ट का काम होता है। इनको स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी मिस्टेक अंदर मैदान में जो हो रही है कप्तान की नहीं है, हमारी मैनेजमेंट के साइड से भी मिस्टेक है। जो इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मैचअप के साथ जा रहा है। अब पूरी दुनिया उस ट्रेंड पे चल रही है, तो हमने ये मिस्टेक की है। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पे भी हमारा। हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कब लेके आना है। शाहीन आफरीदी के 2 ओवर होंगे, मैं लेके आऊँगा 18 to 20, 19 या 17 या 19। हम 14-15 में क्यों लेके आ रहे हैं उसको गलत लेके आए आप उस वहाँ पे, क्योंकि 1 ओवर अपनी ज़ाया करें उसका। हसन अली कब करेगा उसको, अर्ली ऑन आप कर लोगे। ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ग्राउंड की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है हमारी। अब ग्राउंड के बाहर आएंगे उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क जरूर हैं। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ही आसानी से खेला वार्नर ने। वो ओवर से पूरे मैच का पासा पलटा। और फिर हफीज़ जिस वक्त तक आए, ऑब्वियसली हफीज़ नए बॉल पे ज़रा ज़्यादा स्किडी होते हैं, थोड़ा सा लेट आए तो वो भी इफेक्टिव नहीं हो सके। पहला बॉल अनफॉर्चुनेटली हाथ में फंस गया जो भी था, और वो भी हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हो सके। तो ओवरऑल फिर बाद में बॉलर्स को यूटिलाइज भी उस तरह से बाबर आजम नहीं कर सके सही से। देखें, वो राशिद भाई ने बात की, हम लोग मैच बैठे हुए मैच देख रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि चौथा ओवर जो है जो इमाद ने किया है उस टाइम पे वो बनता नहीं था। इमाद बीच में आते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता था। जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना मैचअप्स पे नहीं जाते। पाकिस्तान टीम जो है ना, हम इतना मैचअप्स पे नहीं जाते कि किस तरह क्या होना चाहिए, इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। वहाँ से यही होता है कि जैसे हम लोगों ने सिग्नल रखा हुआ है तो आपको कप्तान को एक सिग्नल दे देना चाहिए कि क्या चीज़ कर सकते हैं। बाकी एंड में तो डेफिनेटली हम जब बात करते हैं कि कप्तान को एम्पावर करना है, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वो भी यंग कप्तान है, अंडर प्रेशर में इतने मैचेस नहीं खेला हुआ। ये उसके लिए आई थिंक उसका एज ए कैप्टन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, इंडिया वाला और ये वाला मैच। तो इसमें मिस्टेक्स होती हैं। फीस जिस वक्त बॉल करने आए वो जो 2 टिप्पों वाला बॉल हो गया, उस पर 6 लग गया, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। हाँ जी, मोमेंटम शिफ्ट होता है। छोटी गेम है तो उसमें आपका गेम जो है ना वो आपके हाथ से निकल सकता है। कुछ गलतियां होती शुरू में, लेकिन आखिरी प्लेयर नजर आया था कि मिस्टेक किससे होगी। आखिरी गलती आखिर की नहीं होती, 2 ओवर की। हम बीच में 2 गलतियां ऐसी करते हैं जिससे पूरा मैच शिफ्ट होता जाता है। बिल्कुल, तो और बिल्कुल, और हम जीतते भी साथ हैं, हारते भी साथ हैं, तो किसी एक भी प्लेयर के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। अब हम साथ बाबर आजम की तरफ भी जाते हैं, जिन्होंने आज 39 रन बनाए 34 डिलीवरीज पे, एंड ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर फॉर पाकिस्तान, with again talking about improving his strike rate while being consistent. He has all those 50s in this tournament. He's what's the figure? It's now the highest, I think, the highest scorer in a debut World T20 competition. He is. If that makes sense to you. Yeah. Just about makes sense to me, but not quite. And another 71 runs partnership on pressure game. I think they have done it
everything, platform, everything, good and reasonable strike rate was there. They done their part, and then rest of the team, Fakhr, used that platform really well, and ended up with a very good total. I mean, at least Babar actually looked as though he settled almost immediately. In fact, right from the start. He looked in control from the start. That shot through the offside early just was pure Babar. That was pure class. Yeah, he's. We all say that over and over again. He's a very special player, and regardless of what happened tonight, he would have made a significant contribution. Why Pakistan would have reached so far, and it's just a little sad in some ways that we all speak of Fakhr as a man being a big match player, that he came good tonight, and we're not going to see him further in the final. That I think will be tough for him because he would have finished on a good note, 55 of 32 deliveries. You couldn't ask anything better. And our guy would have backed him 120% that he's a big match player, but it's sad that we won't see him in the final. I'm sure there'll be other big match That's players right. we can talk about in 3 days' time as we build up to that. Yes, so I mean, it wasn't as though they went a long way down the batting order either. And you had that situation again at the end where Shoaib, Mohammed Hafiz, Asif Ali came in with a mission just to try and clear the boundary. And of course, it's that invidious situation where if you don't quite get it right You have and to. you fall short, well, you end up with sort of a couple of low scores at the end. What we can show you actually is the fall of wickets in that Pakistan innings, just to illustrate the point. Started with actually slightly uncharacteristic from Babar Azam, not quite out of the middle of the bat, and the Australian fielding, the Australian catching here, David Warner, just off the ground a little bit, thank you very much, takes it very comfortably. And you're not the tallest guy, really. So, That's why I have to get off the ground. well judged, well judged. Get him a ladder, get the boy a ladder. This was just bottom of the bat, wasn't it? From Rizwan, Steve Smith, simple catch. And then the big hits at the end, the attempted big hits. Sometimes it works. It's clever bowling with the fingers over the top of the ball. Asif Ali, first ball, dreaming of 6. This wicket actually has at least saved 20 runs, 15-20 runs for Australia. Asif Ali, because sure, there were still yeah. 2 overs to go. That's the potential. Shoaib Malik got a bit cramped there, didn't he? Got a bit sort of ran out of time, I think, in a hurry. Good bowling from Mitchell Stark, but again, this is that was interesting to me because Stark at the front looked good again. Towards the end of the innings, actually, he missed his lengths and a couple of shots went out the ground. Fakhr Zaman, of course, was brilliant and picked him up nicely. This is what makes T20 interesting, to use a sort of mild word, because anything can happen. Anything can happen to anyone because Josh Hazelwood को हम इतना build up कर रहे थे उनका एक ओवर जो 17वां ओवर जो था 21 रन का गया है, गलत सिलेक्शन थी इनकी. इस टाइप के बॉलर जो सीमर हो अच्छी बॉल करते हैं उनको पहले ही खत्म कर देना चाहिए. लेकिन क्या किया इन्होंने, जैम्पा को पहले 13 ओवर शायद किया उन्होंने और अपने जो 5th और 6th बॉलर को तो उनको भी खत्म कर लिया था. तो इसलिए उनको कराना पड़ा क्योंकि 4 बॉलर से खेल रहे थे. अगर 5वां इनके पास होता, पैटिंसन टाइप का बॉलर होता या जे रिचर्डसन होता तो पर वो जो उन्होंने बैटिंग खिला दी उसी से पूरा कर दिया उन्होंने. एक चीज उमर भाई बिफोर हम ब्रेक के ऊपर जाएं, देखा कल इंग्लैंड को भी नहीं एग्जैक्टली पता चला, उनके पास भी विकेट्स इन हैंड थी. आज पाकिस्तान के पास भी विकेट्स इन हैंड, 4 विकेटों पे 176 किया है. तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा टीम को. टूर्नामेंट अब आखिरी मैच पे पहुंच गया है और आकिब भाई ने शुरू में बात की थी कि ये वो वाला टूर्नामेंट है कि पिच पे रन्स होंगे और फिर वो बार बार चेज हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट टोटल क्या है. ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ. बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इनिंग में आपको टारगेट सेट नहीं कर सकते. लाइक आप एक जो बहुत कम ऐसा होता है, रेयर होता है कि आप जाते हो ना, आप पिच के हिसाब से आप जाते हो, टारगेट सेट करते हो. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर में हमें कितने करने चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने ही हुआ. 45 हम कह रहे थे, 40 to 45, 47 हमने किए, विकेट लूज नहीं किया हमने. और जिस तरह फिर हम इन बिटवीन जो ओवर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक ओवरऑल हमारा अच्छा टारगेट
लगा दिया था हमने बोर्ड पे 176, लेकिन जो सेकंड बैटिंग ऑस्ट्रेलियन को पता था कि क्या टारगेट है, उसके किस रन रेट से हमने जाना है, तो उसी को बरकरार रखते हुए वार्नर जैसा स्टार्ट किया। और जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि मोमेंटम को बाकी बैट्समैनों ने उसी तरह रखा, तो उनको पता था कि हमारे पास एक टारगेट है और जो रन रेट रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने दिया। ऑल्दो उनके बैक टू बैक विकेट भी गिर गए, लेकिन उनको अपने टारगेट का पता था। बिल्कुल। And we have reached the last match of the tournament after this, and still we don't know what's a good total to put on the board, which will be defendable. Better to win the toss. Well, okay, we'll have one more go at it. Okay. We'll give that a go on Saturday. Right, let's take another break. We still have lots more to look at in terms of the performances that have made this a special game that it was tonight. See you in a moment. For the moment, though, it's Game on Hay.